Dear students, I'm Dr. Nusrat Gul. Today, we'll be starting the chapter Atomic Structure. The topic that I will take up is dual nature of matter and radiations. Radiations have a dual nature, as some properties of radiations, such as interference and diffraction, can be explained on the basis of wave nature, while some properties, like photoelectric effect, can be explained on the basis of particle nature. यानी कि न ही वेव नेचर और ना ही पार्टिकल नेचर रेडिएशंस के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है और ना ही मैटर की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. बिफोर delving deep into these properties, हम पहले देखते हैं कि what is the difference between the particle and a wave. Particles localized होते हैं, meaning they occupy well-defined position in space. For example, a ball, a grain, or any other substance जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ये localized होता है. While as we cannot predict that wave is at a particular point. Rather, waves are spread out. जैसे हम water waves देखते हैं. If we drop a pebble in water, we see ripples are formed. Those are water waves. इसी तरह sound waves होते हैं. When we talk, we cannot predict कि sound एक particular जगह है. So this is wave nature, जिसको कि हम कहते हैं delocalized होती हैं waves. Similarly, अगर एक जगह कोई particle है, when a particular space is occupied by a particle, another particle can't occupy the same space. यानी कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पर सेम स्पेस दो पार्टिकल्स एक साथ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जबकि मैटर में ऐसा कोई मसला, इस वेव में ऐसा कोई मसला नहीं है. मोर देन वन वेव्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्पेस. इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. इसी तरह से अगर हमारे पास किसी जगह कुछ पार्टिकल्स है, तो the total value is equal to their sum. Whatever the sum of the particles, that is their total number. While as if you have got some waves at a particular place, it is not necessary that the resultant wave may be equal to their sum. It may be equal to their difference, depending upon how they interfere. इस चीज को भी हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे. Particle को हम definitely we can see them, while waves can only be experienced. Again, these particles have kinetic and potential energy. Since particles have mass, they have kinetic and potential energy, while as waves have energy due to frequency and not due to mass. Now, first we will deal with radiations. Radiations का हम wave nature देखते हैं पहले. The property that's explained by the wave nature of this radiation is interference. For example, we have got two waves, and the resultant wave is equal to their sum. We see these two waves are in phase. This is crust, right? This is trough, this is trough. So, जो इनका sum होता है, that is this resultant wave. While as अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो crust, trough, right? तो यहाँ पे the resultant wave, this wave, rather you don't see any wave. Reason क्या है? ये वाली wave इस वाली wave को cancel करती है, because ये दोनों जो है they are out of phase, they are not in phase. So जब waves sum up होकर के रिजल्टेंट वेव बनाए, जब ये इन फेज हो तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. और जब वेव्स एक दूसरे के साथ फेज में ना हो, इट गिव्स राइज टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अनदर प्रॉपर्टी दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर इज डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया हुआ है, एंड आई हैव कॉपीड दिस फोटोग्राफ फ्रॉम britannica.com.
तो बेसिकली डिफ्रैक्शन में होता क्या है, यू सी व्हेन यू हैव गॉट अ वेव, और एक वेव जब चलती है तो उस वेव के सामने अगर कोई चीज आ जाती है, द वेव bends around the corners of that substance. I'll just try to show you. जैसे आपके पास एक वेव आ रही है और इस वेव के सामने दिस वेव इज obscured, और ये जो वेव है दिस विल स्टार्ट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स, राइट, दिस स्टार्ट्स बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स। एक और टाइम में भी ये डिफ्रैक्शन हो सकता है अगर आपके पास एक यू हैव गॉट अ वॉल और इसमें एक स्मॉल ओपनिंग है इस वॉल में, और ये ओपनिंग क्या है, आइडियली दिस ओपनिंग शुड बी इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव फ्रंट जो आ रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे आपका वेव फ्रंट आ रहा है, जस्ट सी, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट वेरी नाइसली। तो क्या होता है, ये जो आपके ये जो आपका ये है अपर्चर है उसके अराउंड बेंडिंग हो जाती है, एंड व्हाट यू गेट ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। जब आपके पास जो अपर्चर है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग वेव, या जो आपका ऑब्स्टैकल है, अगर जो ऑब्स्टैकल इसको ऑब्स्क्यूर करता है इस वेव फ्रंट को, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल to the this wavelength of the incoming this wave front, तो उस टाइम आपके पास प्रॉपर डिफ्रैक्शन मिलती है, एंड व्हाट यू गेट सॉर्ट ऑफ कंसंट्रिक रिंग्स, उनको आप क्या कहते हो, दीज आर योर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है आपका, ये एक्सरेज है। एक्सरे आपको पता है इट्स अ टिपिकल दिस रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सप्लेन हो सकती है ओनली एंड ओनली व्हेन यू कंसिडर दीज रेडिएशंस एज वेव्स। पार्टिकल नेचर में ये आपके साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। नाउ पार्टिकल नेचर में क्या एक्सप्लेन हो सकता है, पहली बात कि जब हम इसको रेडिएशंस को डिफाइन करते हैं या लाइट को डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, यू यू डू टॉक अबाउट फोटॉन्स। आप क्या कहते हो कि लाइट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स को क्या कहते हैं, वी से फोटॉन्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो जब आप कहते हो कि light is made up of photons, and photons are considered to be as packets of energy, they are considered packets matlab particles, we advocate the particle nature of radiations, right। तो एक जो like one of the most important experiments that proved rather this particle nature of radiations, it was uh, conducted by Albert Einstein, और इसको हम कहते हैं photoelectric effect। What he said, he proposed that light be described as quanta of energy, जैसे हमने बात की अभी photons की, that behave as particles, and a photon is a particle of electromagnetic radiation that has zero mass and carries a quantum of energy. Or classically what he used to say, we use it to describe electromagnetic radiations using these wave concepts only. But with the experiments of the photoelectric effect conducted by Albert Einstein, it became clear that this light has got a particle nature as well. तो हमारी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, द when we have got a radiation of sufficient energy, when it strikes a metal plate, we see it is able to eject the electrons. We will be able to explain this ejection of electrons only and only when we consider this radiation to have a particle nature. ये पार्टिकल जो है ये लोकलाइज्ड है, और ये अपनी एनर्जी लोकलाइज्ड वे में इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और इसको इजेक्ट करता है। इफ इट इज डिफ्यूज, इफ इज अ वेव नेचर, इट वोंट बी एबल टू eject this electron, so we won't be able to explain the photoelectric effect based on the wave character. We have to consider this light as light to have a particle character if we want to explain this photoelectric effect. So, so what we say,
this photo has been copied from Wikipedia. सो व्हाट डू वी से दैट जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे, चाहे इंटरफेरेंस है, चाहे डिफ्रैक्शन है, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो एक ही प्रॉपर्टी की बुनियाद पर नॉर ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर नॉर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर कैन वी एक्सप्लेन the nature of the radiation. So what do we conclude? We say that some of the properties can be explained on the basis of wave nature and some of the properties can be explained on the basis of particle nature. Thus, we conclude that radiations have a dual nature. I hope it is clear. Now, matter. As far as the matter goes, particle nature, it is straightforward that matter has a particle nature. Matter में these material particles होते हैं और material particles हमें दिखते हैं. But as far as this wave nature goes, we are not able to sort of digest this wave nature of material particles. Again, there were some experiments that were conducted and it was observed that there are some properties of the matter that cannot be explained on the basis of particle nature only. जहाँ तक particle nature की बात है, तो when an electron strikes a zinc sulfide screen, what do we observe? We observe a point, एक scintillation जिसको हम बोलते हैं point. Point, what does it mean? Point means कि localized entity, yeah, what we say, particle. This does not spread, this electron does not spread as a wave. So this advocates the particle nature of matter. About the wave nature, just as in case of this light, we see interference pattern. Similarly, in case of electron, electrons show interference fringes. This has been copied. I don't remember basically the website, but this has been copied from the web only. तो ये electron के interference fringes हैं. Not only electron, other material particles, protons जैसे, they also show interference patterns. यहाँ पे चाहे electron है, चाहे proton है, these represent matter. So again, interference patterns. Not only interference patterns, we also observe diffraction pattern. ये देख लीजिए आप, this is the diffraction pattern that has been obtained from an electron. It has been copied from Quora.com. तो ये अगर आपको याद होगा, अभी हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरेज है, उनका मोर और लेस सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है. So what are X-rays? X-rays are electromagnetic radiations. They have a well-cut wave character. So when electron shows the same pattern, how can we explain it? We can explain it only and only if we if we accept that electrons have a wave character, right? Again, this experiment, this diffraction pattern experiment, this was done by Davison and Germer, and also it was verified by G.P. Thomson कि अगर हमारे पास एक ये high speed electrons जो एक tungsten filament से निकलते हैं, if they are made to strike nickel crystals, these we see that diffraction rings are formed. And what are these diffraction rings similar to? These diffraction rings are similar to the electromagnetic waves. What does that infer? That infers that this electron has got a wave character. और electron का wave character का मतलब material particles have got wave character. What does that mean? That means matter has got a wave character. So matter has got wave character as well as the particle character, because some of the properties of matter such as scintillation, they can be explained on the basis of particle character, while as some other properties such as these interference fringes, yeah, diffraction patterns, they can be explained only on the basis of the wave character. So what do we conclude? We conclude that matter has got a dual nature. So classically we considered radiations have a wave character, matter has a particle character, but according to the modern concepts, we consider that both matter and radiations have a dual character. This is all for now. Thank you.